ठीक है. सो दिस वर द 4 ways of like heating. अब एक अगला टॉपिक आते हैं हम लोग हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ. आपने सुना होगा फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं मिस निर्मला सीतारमन, शी मेक्स द फाइनेंस बजट, राइट, द बजट ऑफ द कंट्री. सो द जियोग्राफर also felt that it is necessary to make a budget of the incoming solar radiation and the outgoing solar radiation so that we should know. अब आप ही ये सोचिए, why is like if the energy from the sun is coming to the earth, then definitely some energy might be radiating out too, or else in the long run the planet earth will get heated up. But over a period of million of years ago, over a period of million of years, still our earth is still maintaining its temperature where we can survive. तो ऐसे कैसे हो पा रहा है? Definitely the incoming solar radiation or outgoing solar radiation balance कर पा रहे हैं, but it's not like the incoming solar radiation from one field is always equal to the outgoing solar radiation to the same field. अब देखिए, there are various अलग अलग जगह से जहाँ पे incoming solar radiations आते हैं, और there are various other fields जहाँ पे आउटगोइंग सोलर रेडिएशंस जाते हैं. तो फिर ज्योग्राफर्स ने उन सबको पढ़ा एंड फिर देखा कि उनका जो सम टोटल है वो 0 ही है. तो इन सबको एक टॉपिक में उन्होंने डाला, दैट इज नोन एज द हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ. ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड. So, what is heat budget of the planet Earth? A heat budget is a perfect balance between the incoming heat absorbed by the Earth and outgoing, जैसा कि मैंने बताया. तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि like suppose as we have talked, the incoming solar radiation किस में है? That is in short wave solar radiation and the outgoing is in the form of long wavelength. तो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन से मान लेते हैं टोटल यूनिट जो है वो 100 आ रहा है. ठीक है, अब ना टोटल रेडिएशन विच इज 100. नाउ व्हेन इट इज कमिंग, तो इफ यू हैव एवर ट्रैवल्ड इन द प्लेन और फ्लाइट, यू माइट हैव सीन दैट there's a cloud covering the entire of earth and it's very bright over there. ठीक है, तो व्हाइट होने के कारण वो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है वो उसको रेडिएट ऑफ करता है. सो पोर्शन ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज बीन रेडिएटेड आउट. तो जब ये क्लाउड्स यहां पे मिला, इससे ये 27 यूनिट्स हट गया. 27 units are been reflected by the clouds and 2 are also reflected by the earth. Now see, there are various, not all the surfaces of earth absorbs the incoming solar radiations. There might be like rocky surfaces or the seas which might be radiating out or reflecting back. So 2 units is been reflected by the earth and 27 units is been reflected by the clouds. So total 29 तो यहीं पे रिफ्लेक्ट हो गया. ठीक है, उसके बाद ना अगर आप देखेंगे this 6 is scattered to space. See, I will start again. This was a 100 unit coming, जिसमें से 27 आपके क्लाउड्स से वो रिफ्लेक्ट कर गए. 2 फ्रॉम द अर्थ, कितने हो गए? 29 यूनिट्स हैज बीन रिफ्लेक्टेड बैक टिल नाउ, बट द इनकमिंग सोलर रेडिएशन टोटल इज 65. ठीक है, 100 में सिर्फ 65 ही आते हैं. तो मतलब 35 जो है वो रेडिएट ऑफ हो जा रहे हैं. तो अभी तक हमने देखा कि 27 इज बीन रेडिएटेड ऑफ फ्रॉम द क्लाउड्स एंड 2 इज रेडिएटेड ऑफ फ्रॉम द अर्थ. 29 remaining is 6. This 6 is being scattered to space, right? So 6 plus 2 plus 27, a total of 35 units. ठीक है, 35 units radiated off. ठीक है, अगर 100 में 35 यूनिट्स अगर रेडिएट ऑफ हो गए हैं तो इनकमिंग विल बी 65 units. So 65 is the total incoming solar radiation. Now if you see, break it.
This is like 17, 34 and 14. This is like 17. If we talk, 17 is absorbed by the earth. This is 34 unit after the clouds when it has come, that is also absorbed by the earth. So these two units means a total of 51 units is absorbed by the earth, and this 14 unit was absorbed by the atmosphere. Okay. So out of total 100 units, eventually 51 units make it to the earth. The remaining 14 units was absorbed by the atmosphere. ठीक है. तो अगर ये पूछेगा कि out of 100 how much units of solar incoming solar radiation has been absorbed by the earth, तो आपका आंसर होगा 51. ठीक है. Now when this 51 units have like come to the earth, they also need to be radiated off in the form of like long wavelength. ठीक है, रात को जो जनरली जाते हैं, तो the outgoing is the long wave. ठीक है. Now if you'll add total, हमारा ये कितना था 51, तो 23 plus 9 is 32 plus 19, 51. ठीक है. Now it is saying that out of this 23 units radiated from earth, 17 is radiated to space. ठीक है. जो हमारा 51 टोटल यूनिट्स थे, उसमें जो है 23 यूनिट्स जो है वो रेडिएट किए गए हैं. ठीक है. तो दैट इज रेडिएटेड टू स्पेस फ्रॉम अर्थ. ठीक है. 17 यूनिट्स. दिस इज प्लस 9 यूनिट्स इज टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन. कंडक्शन में प्लस 19 गया एंड रेडिएट टू स्पेस बाय एटमॉस्फेयर. ठीक है. ये 48 यूनिट्स. ठीक है. तो टोटल इनकमिंग एंड आउटगोइंग इज बैलेंस्ड. ठीक है. इसको अगर आप एक और अच्छी पिक्चर से डायग्राम से अगर मैं आपको समझाऊं, तो दिस विल बी दिस डायग्राम. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. इट इज सी showing that 100% of solar energy, right? 100% of the solar energy, now it's coming. This is the troposphere and this is the exosphere, right? In the previous chapters we have studied about the layers of the atmosphere. So this is the exosphere, ये troposphere. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो this was the incoming 65%, right? In 65 में जो 14% है, this was by the atmosphere. This is being absorbed by the atmosphere and eventually Earth absorbs only 51%. So a total of incoming 100% of solar energy, जिसमें radiate off हो गए clouds, skies 35%, 65% eventually वो आता है, जिसमें 14% atmosphere absorb कर लिया और 51 eventually बच रहा है Earth को. So this is like the which the Earth absorbs, right? Now when this 51 is percent which is going, 34% is Earth's radiation terrestrial. ठीक है. Convection. ठीक है. So outgoing is 60. See, incoming was total of 65. So outgoing also has to be 65. So it is total of 48 plus 17. Heat is radiated. Absorbed, reflected 35% by the albedo. ठीक है. तो जो incoming और outgoing है वो तो उसमें बना रहता है. So which is the Earth receives almost all of its energy from the sun in the form of short wave radiations. The Earth in turn radiates back to space the energy received from the sun in the long wavelength. ठीक है. As a result, the Earth neither warms up nor does it get cooled over some time. ठीक है. But over a period of time, over like millions of years, like even like a century or we have seen that the Earth's temperature have risen by like 1 degree or 1.5 degree. But that is due to the anthropogenic reasons. ठीक है. वरना else जो है अर्थ अपना बैलेंस बना के चलता है. The surplus heat energy from the tropics is redistributed polar. Okay, this is now
we just saw in the heat budget how the incoming solar radiation and the outgoing solar radiation that is being balanced. Now even one thing we see, like we know that like the earth or the tropics, they receive more of solar radiation. Tropics basically cause there is incoming direct radiations, whereas the poles, they receive less energy cause that is slanting. So it is saying that the surplus heat energy from the tropics is redistributed to polewards. This avoids permanent heating और cooling effect of low and high latitudes. अब देखिए, अब ये होता कि पोल्स में आपको हीट अगर जाता ही नहीं तो वो हमेशा ठंडा ही रहता, that would be like very cold. And the tropics regions which is always getting more of heat, if that heat would not have been transferred to the, like suppose मैं आपको समझाता हूँ, like this is earth, right? अब क्या है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है, अगर ये जो हीट आ रही है अगर ये इधर नहीं रेडिएट आउट होता तो क्या होता, दिस एरिया वुड हैव लाइक गॉट more of heat, more, and then it would have like caused permanent effects. But since this incoming heats at the tropic is redistributed towards the pole, a balance is being created and maintained. Poles भी feasible हैं थोड़े polar areas, and tropicals भी जो है वो feasible area बन के रहता है, ठीक है? It is the like this is the surface of the earth. See, this is the, ये आपका टेम्परेचर का ग्राफ है, तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर ज्यादा है तो ये दिस इज द सरप्लस रीजन एंड दिस इज द डिफिसिट रीजन, द पोलर रीजन्स. सो द सरप्लस रीजन से जो पोलर रीजन्स में है आपके हीट को ट्रांसफर किया जाता रहता है बाय द winds एंड वेरियस अदर मैकेनिज्म्स, सो दैट ए बैलेंस इज बीइंग मेंटेन्ड, राइट?